Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we will do one DSE subject, discipline specific elective subject for Delhi University students. It is from the subject Literature and Cinema and written by Ranjani Mazumdar. And it is about Bombay cinema. Bombay cinema, an archive of the city. Let us proceed to the video now. Please do not forget to share and subscribe the channel and put your valuable feedback in the form of comments. She is Ranjani Mazumdar and the subject is literature and cinema. Ranjani Mazumdar, an independent filmmaker and associate professor of cinema studies at the School of Arts and Aesthetics at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. A very prominent personality who has given many viewpoints about the movie making, specifically how the space is used in movies. Specifically, she has concentrated in this video she has concentrated on gangster movies. Whatever are the prominent gangster movies in India, she has described how the space, how the picturization is used in these kind of movies. This is the special book that I was talking about, Bombay Cinema and Archive of City 2007. It got published, and one more, Urban Allegories, the City in Bombay Cinema 2001. We will talk about both of these and specifically what she has said about gangster movies. So much of her work, I'll say, is balanced around the space, the urban space used in the city precisely Bombay, and popular Hindi cinema. What is the relationship between the city Bombay and Hindi cinema, specifically in gang movies? This has been dealt with within some of her major works, such as these two, Bombay Cinema and Urban Allegories. She has conceived about the ways of understanding urban spaces visually through cinema. अर्बन स्पेसेस को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेमा दैट शी हैज मेंशन इन दीज बुक्स. उनकी जो एकेडमिक डिवोशन है, एकेडमिक स्पेशलाइजेशन है, दैट इज टुवर्ड्स द क्रिटिकल स्टडी एनालिसिस ऑफ कॉमन प्लेस टेक्स्ट्स ऑफ विजुअल कंजम्पशन सच एज posters, advertisements, spectacles, occurrences on the streets, processions, etc. किस तरीके से मूवीज में, सिनेमा में इन सब चीजों को यूज किया जाता है, पोस्टर्स को, एडवर्टीजमेंट को, स्पेक्टेकल्स, कोई भी चीज किसी तरीके से कैसे डेकोरेटेड नजर आती है, क्या क्या अकरेंसेस होती हैं मूवीज में ऑन द स्ट्रीट, या किसी तरीके का कोई प्रोसेशन होता है. सो हर थ्योरीज बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती हैं एक कि हाउ space has been used in cinema. And in this video, though, we will talk mainly about mainstream narrative cinema, but she has talked about in her texts about documentaries and non-fictional movies as well. So उनका जो work है वो ज़्यादा devotion करता है towards the critical studies of commonplace texts of visual consumptions. अब देखते हैं इस बुक में बॉम्बे सिनेमा एंड आर्काइव ऑफ द सिटी. इस बुक में स्पेसिफिकली क्या है जो हमें एग्जाम्स में भी मेंशन करना है और रंजनी मजूमदार ने भी कहने की कोशिश की. इन दिस बुक शी स्टेट्स हाउ हिंदी फिल्म्स डिस्कवर द कॉमन प्लेस लाइक प्रैक्टिसेस इन पीपल एंड सोसाइटी. लोगों की जो कॉमन प्लेस प्रैक्टिसेस होती है वो किस तरीके से हिंदी मूवीज में विजिबल होती हैं. बॉम्बे, द सिटी विच इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक घर है बॉम्बे. This has underwent many ups and downs since its early expansion during the colonial times. This is how आप अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन का प्रीफेस बना सकते हैं कि बॉम्बे सिटी के बारे में मेंशन कर सकते हैं. बॉम्बे सिटी किस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेस, उसका होम, उसका अबोर्ड रहा है और टाइम के साथ कैसे चेंज आए हैं. Besides, through the various phases of social political changes happening in post-independence India. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत तो 1913 में ही हो गई थी जब सबसे पहली साइलेंट मूवी बनी थी और उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आए. Mazumdar thinks of the changes taking place in our cultural expression, namely in our literature, cinema, and art, as being symptoms of
larger changes occurring within the society pertaining to economic and political changes. तो बहुत सारी changes आए हैं हमारी movies में तब से लेकर अब तक. टेक्नोलॉजिकल changes आए हैं, economic level पर, political level पर बहुत सारे changes नजर आते हैं हमारे बॉम्बे सिनेमा में. अब आएंगे हमारा मेजर टॉपिक जो है, दैट इज द स्टडी ऑफ गैंगस्टर फिल्म्स. आपको मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा एग्जाम में, सम क्वेश्चन अबाउट गैंगस्टर स्टडीज. सो रंजनी मजुमदार टेक्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू understand Bombay cinema as the unofficial archive of the city of India. पहले के टाइम पर 2000s में 2010s के टाइम पर जनरली शूटिंग्स मुंबई में हुआ करती थी या फॉरेन लोकेशंस पर. नाउ द टाइम हैज चेंज्ड एंड डायरेक्टर्स आर मूविंग टू small rural areas also, like some village of Uttar Pradesh, or even in Delhi movies are shot now, but earlier movies used to be the representation of Mumbai city only. Mazumdar looks at the representation of Bombay and the lives of its common and marginalized people through gangster films. कौन सी gangster films की हम बात करेंगे, that we will do further in this video. Here the city is not picturesque. In मूवीज में जब गैंगस्टर मूवीज होती है ना, तो सिटी ऐसी नहीं लगती कि कोई सीनिक ब्यूटी है, वाह हमें मुंबई घूमने जाना है. ऐसा फील नहीं आता गैंगस्टर मूवीज को देखकर, बट इट इज रादर अ प्लेस ऑफ रूइन एंड इवोक्स अ सेंस ऑफ डेस्पेयर, क्राइसिस एंड डीके. जब हम गैंगस्टर मूवीज देखते हैं तो मुंबई एक रूइन प्लेस नजर आता है, एक डेस्पेयर की, दुख की, क्राइसिस की, डीके की फीलिंग को इवोक करता है. So these are the three movies that she talks about: Parinda, Satya and Company. I'll suggest, if you have time, try to watch these movies as well. One thing, all these movies are quite interesting, and secondly, it will help you out to answer and understand this video as well. This experience of the city is the experience of a gangland. तो मुंबई को उन्होंने इन मूवीज के थ्रू एक गैंगलैंड का नाम दिया है. शी स्टडीज 3 लैंडमार्क गैंगस्टर genre films, namely Parinda 1989, Satya 1998 and Company 2002. So these are the exact words that she has written in the book. I haven't changed a single word of this particular phrase in which she defines gangster movies. देखते हैं गैंगस्टर मूवीज को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है. गैंगस्टर मूवीज वो कहती हैं इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. गैंगस्टर मूवीज में हमें ट्रेडिशन भी नजर आती है, मॉडर्निटी भी नजर आती है. टू पॉलिटिक्स ऑफ अर्बन स्पेस, अर्बन एरियाज में, शहरों में पॉलिटिक्स किस तरीके से किया जाता है, इंडिविजुअल्स का रोल उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स की स्ट्रगल उसमें क्या होती है. The street is usually the primary site of narrative action in gangster films. घरों के बाहर निकलकर गलियों का भी पिक्चराइजेशन होता है, because it symbolizes freedom from home and it enables constant movement and liberation from claustrophobia of restricted and controlled urban spaces. Generally तो gangster movies में वो जो भी डॉन होता है, जो भी विलेन होता है, उसका एक अड्डा दिखाया जाता है या फिर किसी का घर दिखाया जाता है. लेकिन कई बार स्ट्रीट्स को भी दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें एक रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ फील दी जाती है उस पर्टिकुलर क्लॉस्ट्रोफोबिया से जो हमें हो सकता है जस्ट बाय लुकिंग एट दी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर अड्डा ऑफ ऑल दीज डॉन्स. लेट अस टॉक अबाउट परिंदा. एंड एज आई टोल्ड, मूवीज देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंटरटेन भी हो जाएंगे और इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. Two brothers are there, Kishan, Jackie Shroff and Anil Kapoor. Anil Kapoor and Jackie Shroff. The perfect brother pair. बहुत सारी movies में इन दोनों ने brothers का role play किया है. They live in Bombay, where Karan falls in love with Paro, Madhuri Dixit, and Anil Kapoor and Madhuri Dixit also made a very beautiful, perfect pair. Madhuri Dixit is a friend's sister, Anupam Kher's sister, but Karan then leaves India to attend school in America, and Kishan meanwhile enters into a life of crime, falling under the sway of Anna Nana Patekar, wonderful actor, a drug dealer. When Karan decides to return to India to
pursue a relationship with Paru, that is Madhuri Dixit, Kishan tries to keep him as far away from his criminal life as possible. जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है इस criminal life से, that is the story. But he is not able to do so and the life takes a different turn that all you will come to know when you will watch the movie. मूवी में वॉयलेंस को बहुत ओपनली दिखाया गया. दिस इज व्हाट रंजनी मजूमदार मेंशंस. द वॉयलेंस इन परिंदा इज परफॉर्म्ड इन पब्लिक स्पेसेस. कैन यू सी दिस स्पेस? Sometimes even in broad daylight. Here also you can see broad daylight. This violence spills over into private spaces of characters as well. ऐसा नहीं है घर के बाहर violence हुआ था तो उसके impacts घर के अंदर नहीं आएंगे. घर के अंदर भी impacts आते हैं और इतना एक तनाव, इतना एक डर फैल जाता है कि कुछ characters को घर के अंदर ही lock होना पड़ता है. Throughout the movie, Jackie Shroff keeps on suggesting Anil Kapoor and Paru not to be seen on public places. So we see how Paro and Karan are never allowed to enclose themselves in a safe space of love and domesticity without being invaded or interrupted. हमेशा उनकी लाइफ में कोई ना कोई इंटरप्शन, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई वॉयलेंस बना रहता है. Ultimately, it is decided that Karan and Paro will get married and will leave their place and will go to some ancestral village and will try to live happily ever after. Karan is on the way to his village with Paro after they are married, a marriage that was also conducted privately and with urgency. But we never see this village as the couple does not escape to city alive, unfortunately. The image of the village are not even slipped into the sequence of the children's past. तो पूरी मूवी जो है वो बहुत ही वॉयलेंट एनवायरनमेंट में बनाई गई. विलेज की एक पिक्चर तो है कि विलेज एक पीसफुल स्पेस है, लेकिन उस विलेज को कभी मूवी में दिखाया नहीं जाता है. Not even through the flashbacks. So home thus remains an imagined place, imagined space which is unknowable. There is no escape from the city of violence and death. अगर है ही तो वो डेथ की फॉर्म में ही है एस्केप. जिंदा रहकर आप इस वायलेंट सिटी से एस्केप नहीं कर सकते. दैट इज शोन इन दिस गैंगस्टर मूवी. This is how she describes this movie: ruin and the uncanny city, memory, despair, death in Parinda. So Parinda's Bombay is fragmented into dark, gloomy spaces with all the characters framed within a light and shadow zone. बिल्कुल gloomy, बिल्कुल उदास, बिल्कुल dark picturization है पूरी मूवी में Bombay spaces का. The film's protagonist yearning for happiness is constantly posed but never fulfilled. फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, स्पेसिफिकली दीज थ्री पीपल, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित एंड जैकी श्रॉफ, वो हैप्पीनेस चाहते तो हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन उनकी हैप्पीनेस कभी फुलफिल नहीं होती. थ्रू अ नैरेटिव अबाउट होमलेसनेस, द फुटपाथ, डेथ, self-destruction, Parinda city transformed into a site of ruin, emerging as an allegorical response to the urban experiences in India. ऐसा लगता है कि अर्बन एक्सपीरियंस, शहरी अनुभव शायद इसी तरीके के डार्क और ग्लूमी होते होंगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका एलिगोरिकल रिस्पॉन्स किया गया है, दिखाया गया है इस मूवी परिंदा में. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सत्या. Ram Gopal Verma's movie it is, Satya, and a completely gangster movie. This is the exact word written by Ranjani Mazumdar about this movie Satya. Mixture of claustrophobic spaces with documentary styled visuals. Claustrophobic, बिल्कुल दबे हुए, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डार्क ग्लूमी प्लेसेस को क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लेसेस कहा जाता है. क्लॉस्ट्रोफोबिया एक तरीके का फोबिया भी है, बीमारी भी है, जिसमें किसी पर्सन को किसी भी एनक्लोज स्पेस में जाते हुए डर लगता है. तो क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेसेस को दिखाया गया इस मूवी में और ऐसा लगता है कि आप किसी गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं. लेट अस नो अबाउट दिस मूवी. It is about organized crime in India. The film follows Satya, whose role is played by Chakravarti, an immigrant who comes to Mumbai looking for a job, befriends Bhikhu Matre, that is Vajpayee, and is drawn into the Mumbai underworld. Let us know more about this movie. Although
The movie has got a great amount of violence, but there are also some kind of normal familial romantic relationships as well. Satya hopes of building a home with Vidya. Vidya, who is the role is played by Urmila Matondkar, and we are shown the harmony and romance of Bhikhu and his wife Manoj Vajpayee and Shefali Shah. So these are the scenes, these are the characters who give some kind of respite from the ongoing continuous violence of the whole movie. Look at the lyrics of this Kalu Mama song, Goli Maar Bheje Mein. लिरिक्स इटसेल्फ आर वेरी वॉयलेंट. तो एक ऐसी मूवी है, गैंगस्टर मूवी है, जिसके गानों के लिरिक्स भी वॉयलेंट है. सो यहाँ पर रियलिज्म तो दिखाया गया है कि पूरी मूवी में वॉयलेंस है, ऐसा वॉयलेंस जो शायद वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में होता भी होगा बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ टू मेनी गैंग्स इन मुंबई. लेकिन इस तरीके का गाना बजाना शायद नहीं होता होगा. तो रियलिज्म से एक तरीके का रिस्पाइट भी दिया गया. रियलिज्म जो है वो इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि सिर्फ वॉयलेंस ही वॉयलेंस दिखाना है. देयर आर सॉन्ग्स लाइक दिस गोली मार भेजे में, जहाँ पर ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी गई है जैसे कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, विच आई थिंक इज नॉट अ रियलिस्टिक पार्ट ऑफ गैंग्स. इसके बाद बात करते हैं कंपनी की. अगेन अ वेरी फेमस मूवी एंड वन ऑफ द इनिशियल मूवी ऑफ विवेक ओबेरॉय. Ajay Devgan and Manisha Koirala were also there in prominent roles. Company is a 2002 Indian Hindi language gangster film directed by Ram Gopal Verma and written by Jaideep Sahni. Even South actor Mohan Lal also played a prominent role in it. इस मूवी में भी गैंग दिखाया है, वॉयलेंस दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है. हाई स्टेटस दिखाया. हाई स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर्स अलाउ फॉर मोर ऑफ वेल लिट फ्लैशी इंटीरियर्स लाइक expensive hotels, cars, airports, bungalows, etc. in this film as opposed to the shabbiness of garbage-ridden spaces in Satya. जैसे सत्या में तो हमें लो क्लास लोकेलिटीज बहुत ज्यादा दिखाई गई हैं और परिंदा में भी हमें नॉर्मल लोकेलिटीज दिखाई गई हैं, लेकिन कंपनी में हमें बहुत फ्लैशी लोकेलिटीज, बहुत लग्जूरियस स्पेसेस को भी दिखाया गया है. This is also the exact line. I haven't changed a word. Let us read. Space is explored via a camera perspective that defies the acceptable framing of the ordinary lens. स्पेस को दिखाया गया जैसे वो ऑर्डिनरी लेंस से कैप्चर किया गया सब कुछ. एक्सपैंडिंग द फ्रेम ऑन द साइड्स, डिस्टॉर्टिंग पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिंग इमेजिनरी हॉराइजन्स. कई बार जो कैमरा है वो साइड एंगल लेता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ वॉयलेंस, और वो वॉयलेंस सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होता है. द कैमरा adopts the role of a protagonist whose vision is playful and angular. तो सबसे अच्छा रोल जो होता है ना गैंगस्टर मूवीज में वो कैमरा का होता है. कैमरा अपने आप में एक प्रोटैगनिस्ट है. Through this angular vision we enter a range of urban space where distortion is spectacularized to evoke dread, decay and the pleasurable engagement with commodity aesthetics. कैमरा के एंगल्स इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि सब कुछ हमारी इमेजिनेशन में रहता है, और जो कुछ भी है, जो कुछ भी इन मूवीज की एसेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गुड कैमरा एंड गुड कैमरा पर्सन. These films, I'll say, basically offer a different look, different perspective at the spaces of the known city. If we will think about Mumbai today sitting in some other city, we will think कि everywhere we will get to see some shooting is going on, some film star is there, but we will never think कि कोई violence हो रहा होगा, कोई दो gangs आपस में लड़ रहे होंगे. लेकिन इन movies में मुंबई की एक different picture present की गई है. Pasts are represented along with criminal brutal activities they perform. अगर हमें किसी के पास्ट भी बताए गए हैं तो वो भी ब्रूटल है. थिंक अबाउट द पास्ट ऑफ अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ इन परिंदा. तो वो अपने पास्ट के बारे में भी सोचते हैं तो कोई गुड मेमोरीज नहीं होती. मोरालिटी स्टैंडर्ड्स आर डिस्टॉर्टेड. मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स को डिस्टॉर्ट कर दिया गया. वी इवन स्टार्ट सिंपथाइजिंग विद सम गैंगस्टर कैरेक्टर. एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कभी किसी का मर्डर तो किया है, लेकिन हमें उसके साथ सिंपैथी करवा दी जाती है. इस तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है. परिंदा मूवी में
जैकी श्रॉफ ने कुछ मर्डर्स किए होंगे, वी सिंपैथाइज विद जैकी श्रॉफ एंड कंपनी मूवी में अजय देवगन, मनीषा कोइराला एंड विवेक ओबेरॉय, ये तीनों क्रूअल रहे हैं, लेकिन हमें उनको एक प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखाया जाता है और हम स्पेसिफिकली विवेक ओबेरॉय के साथ बहुत सिंपैथाइज करते हैं। जो भी ऑर्डिनरी रूल्स है ना लीगैलिटी के, वो अपोज हो जाते हैं, मोरालिटी स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हमें किसी ऐसे पर्सन के साथ सिंपैथी हो जाती है जिसने तो मर्डर किया होगा। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में हाउ कैन वी सिंपैथाइज विद समबडी हु इज अ murderer? Now this is the conclusion. I haven't changed the lines of this conclusion as well. Mazumdar describes that the sexy violence in such films stages urban trauma through an aesthetic of garbage. They paint a city which bears a ghostly sharp remains of the dream-like glossy touristic image of the city found in advertisements and family extravaganzas. So imagine yourself, you reach to Mumbai and you have got the glossy touristic image of Gateway of India. But when you reach to Gateway of India, you find two gangs are fighting with each other. यहाँ वहाँ लाशें बिखरी पड़ी है. That kind of impact is given in the movies of gangs. गैंगस्टर मूवीज में ऐसा इम्पैक्ट दिया जाता है कि मुंबई तो बहुत वायलेंट सिटी है, एंड इफ यू आर considering it to be a dream city, a glossy city, a touristic place, a place where you can do family extravaganzas, then you are wrong. You will just get to see violence in Mumbai. So this was your complete answer for this particular topic. If you want to join the classes to cover all the topics in detail, you can click the link in description to get connected to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.